Hello students, my name is Ajit Pal Singh from Apollo Academy Sangrur, and today we will start with the numericals of speed and velocity of class 9th. As we know, yesterday we have discussed about the various definitions and various kinds of speed and velocities, and today we will deal with the numericals. And for your revision, I am writing down the formulas of speed and velocities. Speed or velocity is equal to distance upon time. Let's make velocity another thing. Velocity is equal to displacement upon time. Average speed total distance upon total time. Average velocity total displacement upon total time. Where speed is denoted by V, velocity is also denoted by V. Average speed is denoted by V AV, and average velocity is also denoted by same V AV. The only difference in speed and velocity is the directional thing. Speed is non-directional and velocity is directional, that is, velocity is a vector and speed is a scalar, as the difference between distance and displacement. But in all the numericals, we will only deal with bodies moving in a straight line. So mostly speed will be equal to velocity. Only one case in which speed is not equal to velocity is, it is a special case marked by star, when body comes back to its original position, because in this case displacement is 0, so velocity will be 0. So students, pick up your pen and notebook, and I will dictate the statement. You have to calculate what is asked in numerical from you. So first of all, write down the numerical. A tourist cab goes from Delhi to Agra. In the morning and covers the journey of 240 kilometer in 4.5 hours. The cab returns from Agra to Delhi. The cab returned from Agra to Delhi
during night, time covering the journey is 3.5 hours. Calculate the average speed and average velocity of the entire journey. So, first of all, we will see how to solve a numerical. We have a thinking pattern like, first we will write down the given part. Given is distance denoted by S. The total distance, the distance is 240. No, for taking given, let us assume a diagram of this numerical. So in this numerical, if we read it carefully, we have to go from Delhi to Agra. This whole distance is 240 kilometer. And we also come back from the route from Delhi to Agra. This whole coming back journey is also 240 kilometer. But when we go on to Agra, we have spent 4.5 hours. And when we come back, we have spent 3.5 hours. So this is the given thing, and we represent it diagrammatically. Diagrams are very important in your physics. So just before solving the numerical, you should have a diagram in your mind. Why shouldn't I take a straight path between Delhi and Agra? I can take a straight path between Delhi and Agra, but I know that there is no straight road between Delhi and Agra. If they have said a point A and a point B, not Delhi and Agra, then I should take a straight line. But it doesn't matter. I can take it as Delhi, Agra. Things are same, 240 kilometer of going and of coming back. Then again 4.5 hours and 3.5 hours, though things are same. So let's move with the first diagram. Now write down the given thing. Given journey 1, going, distance is 240 kilometer, time taken, small t is 4.5 hours. Journey 2, coming back, distance is 240 kilometer, time taken, small t is 3.5 hours. To find, what we have to find? We have to find average speed and average velocity. So this is the part which is given and which is asked to you. Just make it in on your notebook. We have to follow proper algorithm to solve the numerical. We will have to follow proper scheme to solve the numerical, and that scheme is first write down the given part, then write down the question which is put by the
statement to you. And thirdly, we have the formulas. So now going for the solution. Solution. Part A, average speed. As we know from the formula, average speed is total distance upon total time. What is the total distance? 240 when it is going and 240 when it's coming back. So 240 kilometer plus 240 kilometer by total time 4.5 hour when it is going and 3.5 hour when it is coming back. 4.5 hour plus 3.5 hour. Calculate it. We will get 480 kilometer upon 8 hours. So average speed comes to be 60 kilometer per hour. Make one thing clear in your mind here. The units are kilometer per hour. The units are kilometer per hour. But the SI units of speed and velocity are meter per second. But in this numerical, we don't have to make the units meter per second. And if it is asked that you have to make the units in meter per second, then you can change them. And I will tell you the method to change kilometer per hour to meter per second in next chapter. In next chapter, not in next chapter, but in next lecture. Okay? So from now, keep it simple. Keep it simple. If the units of distance is given kilometer and the units of time is given hour, then we will take it as given in the numerical. ठीक है बेटा, ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਵੇਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਕਿ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ. ਨਾਓ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ. As we know, average velocity, total displacement upon total time. So what is the displacement? Displacement is zero here. Body is moving, we have written it here that when body comes back to its original position, average velocity is zero. Why? Because displacement is zero and you have to mention it. Because अब तुसी ये mention करना है because the body came back to its original position, so
displacement is 0, hence average velocity is 0.8 comes to be 0 km/h। हाँ जी बेटा, बहुत ही सौखा ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। डॉली ड्राइव्स हर कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। डॉली ड्राइव्स हर कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। अखर स्ट्रेट क्या उन्हें देखो, बड़ी चलाकी नाल उन्हें पाथ नूं स्ट्रेट दसता अपने नूं। ये चीज़ नोट करने वाली सी। एट अ यूनीफॉर्म रेट, मोशन उन्हें की कहता, यूनीफॉर्म मोशन कहता। ये भी चीज़ नोट करने वाली आ भी उसकी स्पीड ना वध रही है ना घट रही है, एक ही स्पीड से जा रही आओ। इतों ये चीज़ पता लग रही है अपन। एट अ यूनीफॉर्म रेट ऑफ 40 km/h, ऑफ 40 km/h for 2 hours, and then at a uniform rate of 70 km/h for 1 hour। ठीक है जी। कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। हाँ जी बेटा, गिवन देखो की है। पहले डायग्राम बनाने सेम। चलो, कहना डॉली ड्राइव्स हर कार एट अ स्ट्रेट हाईवे एट अ यूनीफॉर्म रेट ऑफ 40 km/h फॉर 2 hours। जिहड़ा ये रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल A to B पॉइंट है, उत्थे उन्हें 40 km/h की स्पीड नाल गड्डी चलाई है। किन्ने टाइम वास्ते? 2 hours वास्ते। अगे जिहड़ा रास्ता है B to C दा बेटा, उत्थे उन्हें गड्डी किवें चलाई आ? उत्थे उन्हें चलाई आ 70 km/h की स्पीड नाल 1 hour वास्ते। पुछ की रहा हो अपने तो? गिवन तो अपने को आही चीज़ां ने। गिवन स्पीड फ्रॉम A to B 40 km/h, टाइम टेकन फॉर हाउ लॉन्ग? टाइम इज गिवन 2 hours। स्पीड B to C 70 km/h, टाइम 1 hour। हाँ जी बेटा, थोड़ा जिहड़ा माइंड आ वो ऐ कहंदा होऊ 40 + 70 कितना हो गया? तुसीं कहोगे जी 110 km/h बाय टाइम ला दोगे 3। ध्यान नाल देखो, एवरेज स्पीड गई है उन्हें। फॉर्मूला की है अपने कोल? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। फाइंड आउट आप करना। अपने कोल डिस्टेंस तो है ही नहीं, अपने कोल तो स्पीड है, एक टाइम है।
इत्थों आपां नूं बेटा पहला डिस्टेंस कढ़ना पऊ, पहला ए तो बी तक का डिस्टेंस कढ़ना पऊगा, फिर बी तो सी तक का डिस्टेंस कढ़ना पऊगा, फिर उन्होंने ऐड करना पऊगा। हाँ टाइम गिवन आ, नीचे आप 2 + 1 ला देंगे। चीज़ समझ आ रही है ना? थोड़ा दिमाग ये कहता हो भी जी 40 km/h प्लस 70 km/h बाय 3, ये गलत है, it is wrong. Why it is wrong? Because it is total speed by time. Doesn't make any sense. ये कोई सेंस ही नहीं बेटा बना रहा। फॉर्मूला तो अपने को टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ माइंड च लैके जाना भी ये गलत क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं आपां नूं दिता, तां आपां पहलां डिस्टेंस फाइंड आउट करांगे। वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। इत्थे ट्रिकी आ, देखो ये इन्ना सिंपल नहीं है जिन्ना तुहानूं शायद स्टेटमेंट ते लग रहा होगा भी हाँ जी सीधा ही ऐड करके, जिवें आपां पिछली च कीता सी, ऐड करता सीगा सीधा थल्लों ओह करता सी टाइम नाल। हुण इत्थे फाइंड आउट करांगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी is equal to how much? As we know, speed is equal to v is equal to distance upon time. V is given 40 is equal to s upon 2. So s come to be s1 कह दो, इनू की कह दो s1, t1 इनू v1 कह दो, 1 1 ला दो नाल क्योंकि दो नेगियां, दो सिचुएशंस ने। तो S1 कम्स टू बी 80 किलोमीटर, ये S1 आ गया। इत्थे आपां S2 कड्डांगे, V2 इज गिवन, S2 वी हैव टू फाइंड अपॉन T2, V2 इज 70, S2 वी हैव टू फाइंड, T2 इज गिवन 1 R, so S2 कम्स टू बी 70 किलोमीटर। So now we will find out the total distance. Now we will find out the total distance. And the total time is given 3 hours. The total time of whole journey is given, that is 3 hours. So total distance is S1 plus S2. 80 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर 150 किलोमीटर। ठीक है बेटा। टोटल टाइम 2 hours plus 1 hour 3 hours। एवरेज वेलोसिटी, टोटल distance upon total time, distance is 150 by 3, so comes to be 50 km/h। इहदा मतलब पता की है, इहदा मतलब है बेटा जे वो परसन ये सारी जर्नी ए तो लैके सी तक 50 km/h की कॉन्सटेंट स्पीड नाल भी जांदा, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ पूरी जर्नी कवर करने ਲਈ कितना टाइम लगना सी, 3 घंटे लगने सीगे। देखो आ भुल जाओ सारा कुछ, डिस्टेंस आपां नूं पता है कितना गा 150। ये चैकिंग है, आप चैक कर रहे हैं भी मेरा जो आंसर है वो सही आया है। 150 किलोमीटर होल डिस्टेंस है तो मैं एवरेज स्पीड कड्डी है 50 km/h, जबकि मैनूं पता एवरेज स्पीड ਜਿਹੜੀਆਂ दो स्पीड सी उन्हां तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तुहानूं दस्सिया सी लैक्चर च, एवरेज का मतलब आ कदे वध रही है कदे घट रही है, पर जिहड़ी आपां मन्नीए भी होल जर्नी च कवर करनी आ ओह स्पीड, ठीक है, तो 50 km/h आ। हुण देखो इत्थे 150 किलोमीटर है तो मैं इत्थे जा रहा 50 km/h की स्पीड नाल, तो मैं ये सारी जर्नी ए तो लैके सी तक किन्ने टाइम च कवर कर जूँगा, मैनूं पता। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी गिवन है 50 जिहड़ी आपां कड्डी सी, ये मैं चैकिंग कर रहा, चैकिंग। डिस्टेंस मैनूं पता 150, टाइम जे 3 आ गया ना फिर अपना आंसर ठीक आ जाऊगा 3। देखो
it is equal to 50, t is equal to 150 and t comes to be 150 by 50 which is 3। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕੁ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 50 ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3-4 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम डिवोशन टू मी, दैट्स ऑल।